Okay, hello everyone. I'm Sudipta, welcoming you all to Vedang Teachings powered by Vedang Institute of Technology. So, tell me, how are you guys? How are you guys? आज लास्ट को कहिबे 8-9-10 डिग्री चैनल विषय कंफ्यूज लागे मु कहिबिनी भक्त बंधु आ तमे पचारिला बोली बिल्कुल कहिबिनी शट अप सोनल काली ब्लॉक हेइथिला बोधे पाइलानी आज भी ब्लॉक हेबार इच्छा अछि आज भी ब्लॉक हेबाकू इच्छा होछि की कनेक्ट हुआ जल्दी जल्दी कनेक्ट हुआ स्टार्ट करिवा क्लास आज गोटे दिन बैक टू बैक बोधे 6-7 क्लास मोर बुझिला कैप्टन yes you are the only one you are the only one among all the students okay चलो so geography guys आज टिके डिस्कस करिबा एटमॉस्फेयर तार लेयर तापर टिके डिस्कस करिबा so this is the quote first आपण माने को ट्राई कर माने फील हबो कि आई वोंट डू इट आफ्टर दैट आपण माने फील करिवे लाइक मतेटा करिबार कथा ही नुह मोटा करि पारिबी नाही देन आपण मानकर सोच चेंज हबो कि हाँ मु करिबा को याकू चाहूची देन आपण इच्छा हबो चलो टिके ट्राई करिबा ट्राई जते बेले करि परिबे देन आपण गोटे कॉन्फिडेंट फील हबो यस देन आई कैन डू इट आई कैन ट्रू भाबंतु आई कैन जीवा पई जो स्टेप पुडा लागिबो ना सेटा आपण माने भाबिबा को जदी अधिक टाइम नै गले ताहाले डेफिनेटली यू कैन नॉट जदि आपण माने ऑल ऑफ सडन पूरा सर्टेन टाइम रे आपण माने डिसीजन नै पारुचंती कि यस मते एटा क्रैक करिवार अछि यस मते आज सिलेबस कंप्लीट करिवार अछि यस मु आज गोटे दिन रे मैथ एतिकिटा करि परिबी यस मु आज रीजनिंग होल प्रैक्टिस करि परिबी किछि भी आपण जदि स्ट्रेटजी माइंड रे सेट करूचंती एंड ता अकॉर्डिंग आपण माने सेटा को कैरी फॉरवर्ड करूचंती इंप्लीमेंट करूचंती देन ओनली यू कैन रीच टू दैट लेवल ओके वेरी गुड सो डेफिनेटली आपण माने सक्सेस पाइबे जे पर्यंत आई वोंट आई कैंट आई वांट टू याकू आपण माने डिलीट करि परिबे नाही जे पर्यंत आपण डिलीट न करिसंती से पर्यंत आपण सक्सेस पाइ नाहंती एंड हाउ डू आई डू इट ता पई तो आमे ही अछु ना आपण माने को सिखेबे लागि केमिति आपण माने प्रिपेयर करिवे सो दिस इज द मिडिल पार्ट ताकू आपण माने आम ऊपर छाडी दियंतु देन रेस्ट आपण मानकर ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस टेल मी फर्स्ट क्वेश्चन कुहा मते अरे भुवनेश्वर को माने अच्छा करंट सब बडे कटिछि ना केवल एई रीजन ने कटिछि मते को व्हिच गैस दो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी plays a vital role in regulating the earth's temperature earth temperature कहिला माने आपण माने जानिछंती नाइट्रोजन आसी गला 78% ये आसी गला 21% तो एमाने तो एलिमिनेट ही हे गले रहिला के ना मैम आर्गन हमर पळेला कोउतरे ना मैम दिस इज अ इनर्ट गैस दिस इज अ इनर्ट गैस एंड हमें याको रिलेट करूने अर्थ टेम्परेचर सहित वन एंड ओनली किए हबो ना मैम कार्बन डाइऑक्साइड यस और नो नाइट्रोजन आसिलाने ऑप्शन ने हैं पंडित नाइट्रोजन आसी डिलीट भी कर दोचंदी ना मैम डिलीट कर दोच आपण देखि देबे बदमाश तळ तमे सब गोटे गोटे बदमाश ओके सो रिलेट करो द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ओनली 0 पॉइंट केते प्रेजेंट अछि जदि हम कहबा एटमॉस्फेयर रे ओनली 0.04% दैट इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर यस और नो यस very good so it was the trap हमें कहि परिबा 0.04% प्रेजेंट रे बट traps the ongoing infrared radiation and greenhouse effect amara कहउथि पे आसे ना due to the presence of this carbon dioxide in the atmosphere nitrogen 78% आसे that is non reactive and there is no major role in the heat balance clear so मन रखिबो carbon dioxide rise ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ए सब जिंस हुए सो कार्बन एमिशन पाई हमर डिफरेंट डिफरेंट जेमिति हमर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैला पेरिस एग्रीमेंट हैला एउडा को रिलेट करी मन रख परिबो ना वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को which gas is found in the highest concentration in the stratosphere tell me which gas is found को गैस को पाउछे कोठी ना मैम स्ट्रेटोस्फियर लेवल ले कोठी ना मैम स्ट्रेटोस्फियर पचाला फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर देन स्ट्रेटोस्फियर देन मेसोस्फियर देन थर्मोस्फियर देन द लास्ट वन इज द एक्सोस्फियर सो इन मिडिल रे हमें कोन कहूचे स्ट्रेटोस्फियर सहित रिलेट करबो काहा को कहला काहा को रिलेट करबो वेरी गुड दैट इज द ओजोन और ताको हमें कोन ना O3 रे सिंबलाइज करूचे यस और नो टेल मी दैट यस और नो लिंक शेयर हेछि ना नै रे लिंक शेयर हेछि तो क्लास रो
स्ट्राटोस्फियर को भूली जाइछि देखिलो देन मो मामा देखि कंप्लेन करियो कि तू क्लास करूछु मते कहूनु मु क्लास देखिबी चलो सो ओजोन को हमें रिप्रेजेंट करूचे O3 भाबरे एंड हमें कहि परिबा कि दैट फॉर्म्स द ओजोन लेयर इन द स्ट्राटोस्फियर लेयर ए स्ट्राटोस्फियर लेयर रे हमर कोन ना मैम ओजोन लेयर फॉर्म करे ए ओजोन हाना नाही मते कुआ एंड ए ओजोन हमर एब्जॉर्ब करे कोन ओजोन हमर एब्जॉर्ब करे गाइस यूवी रेज को कहा को ना फ्रॉम द सन जो हमर यूवी रेज जो हमर कोन ना मैम यूवी रेज आसे तो ए यूवी रेज को हमर एब्जॉर्ब करे किए ना मैम द O3 लेयर और द ओजोन लेयर हाँ ना नहीं मते कुआ क्लियर नाइट्रोजन दैट इज द मेजर एटमॉस्फेरिक गैस जदि आपन को पचारा गला व्हिच गैस इज द मेजर एटमॉस्फेरिक गैस बिकॉज़ ऑफ द 78% it is dominating the atmosphere that's why this is the major atmospheric gas after that the second measure is the oxygen with the 21% yes or no yes ma'am चलो next बा so मन रखो ओजोन लेयर डिप्लीशन केमिति हुए ना ओजोन होल हमर अछि ओजोन होल कोठी ओवर द अंटार्कटिका जदि आपण माने क्वेश्चन पछाटिबो ओवर व्हिच रीजन द ओजोन होल इज प्रेजेंट ना ओवर द अंटार्कटिका क्लियर very good that's the reason of the ozone depletion next question which atmospheric layer protects us from the meteors acha meteors उल्कापात हुए ओके एई भली क्वेश्चंस आसीबो ना LTR एंड SSB TGT रे एकदम राजकुमार आसीबो सब लेवल रा क्वेश्चंस आसीबो एंड एटा भी आसीबो ओके नेक्स्ट मते कुआ व्हिच एटमॉस्फेरिक लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मेटियोर्स अच्छा मेटियोर्स माने कोठु हमको एटमॉस्फेयर रे को लेयर्स हमको बंचौछि मते कुआ मेटियोर्स माने हमें कोन कहउचे ना मैम डिफरेंट टाइप रो उल्कापात जो हुए हमें ताकू कहि परिबा मेटियोर्स तो हला एटा की हमको रखौछि ना मैम दिस इज द मेजोस्फियर कोन हबो मेजोस्फियर so mesosphere amar kotu na up to the 50 to 80 kilometer spread heichi in the atmosphere that is 50 to up to 80 kilometer amar kon spread heichi ma'am that is the mesosphere and this is protect us from the meteors to the atmosphere hona nai mate kuwa troposphere कहले कोन कहि परिबो ना मैम troposphere को आमी जानि छे weather layer भाबरे को लेयर ना वेदर लेयर भाबरे जानि छे ट्रोपोस्फियर को देन जदि पछरा गला स्ट्राटोस्फियर को ताहाले आपण कोन कहि परिबे ना एबे कहिथिली मैम O3 लेयर हरा नै ओजोन होल कंटेन करूची अंटार्कटिका रीजन रे अछि देन को थर्मोस्फियर कहले कोन बुझुछ ना दिस इज द हाई टेंपरेचर जोन एटा को हमें कोन ना मैम हॉटेस्ट जोन बोली कहूचे दिस इज द हाई टेंपरेचर जोन क्लियर नेक्स्ट the ionosphere is important for tell me the ionosphere is important for what the ionosphere is important for what will be the right answer tell me ozone protection बिल्कुल हबनी ozone protection सहित ozone layer सहित कोन रिलेट करथिली ना मैम स्ट्राटोस्फियर को कहिथिले हां ना नहीं कहा को कहिथिली स्ट्राटोस्फियर को कहिथिली आफ्टर दैट the cloud formation where na that the starting layer from the earth surface ame कहउचे troposphere so troposphere because ame जानु छे ame cloud को देखि पारुचे so troposphere layer रे जोटा ame ताको देखि परिबा that is troposphere हना नाही cloud formation होउची then कोन हबो ना मैम रेडियो कम्युनिकेशन होउची कोन होउची रेडियो कम्युनिकेशन ionosphere reflects the radio waves that long distance communication be हुए through this radio communication हना नाही मन रहिबो जेट स्ट्रीम आसिले कोन कहबो दैट इज जेट स्ट्रीम जदि आसिला एरोप्लेन आसिला आपण माने कोन कहि परिबे एटा भी हमर कोन ना मैम एई ओजोन प्रोटेक्शन जेट स्ट्रीम ये सब स्ट्राटोस्फियर रे आसीबे कोथरे आसीबे ना मैम ये स्ट्राटोस्फियर रे आसीबे हना नहीं यस वेरी गुड सो मन रखो फ्रॉम द आयोनोस्फियर कोठू ना 80 to 400 किलोमीटर पर्यंत स्प्रेड हेइ थाए and this is ionized by the solar radiation yes or no कहा द्वारा ionized हेइ थाए by the solar radiation yes very good चला next मते को which layer extends from about 80 km to 400 km above the sea level above the earth through 80 to 400 km guys एबे ही कहिली 80 to 400 गले कोन हबो ना स्टार्टिंग मैम ट्रोपोस्फियर लेवल हमर स्टार्टिंग रहउची दैट इज 8 to 80 जो ट्रोपोस्फियर लेयर फर्स्ट रहउची देन स्ट्राटोस्फियर दिस वन इज द ट्रोपोस्फियर राइट तापर आसुची कोन स्ट्राटोस्फियर द क्वेश्चन तापर आसला कोन स्ट्राटोस्फियर तापर आसला कोन ना मैम मेजोस्फियर तापर आसला कोन ना थर्मोस्फियर लास्ट वन इज द एक्सोस्फियर
सो हमर ट्रोपोस्फियर केते जाईची ना मैम ये हमर स्टार्टिंग 8 टू 18 पर्यंत हमर जाईची ट्रोपोस्फियर हो ना नहीं मते को 8 टू 18 पर्यंत जीव ट्रोपोस्फियर सो आफ्टर दैट हमें कहि परिबा व्हिच लेयर एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 80 टू 400 80 टू 400 कले कहा को हमें कहबा ना मैम दैट इज द थर्मोस्फियर रीजन कहा को ना मैम थर्मोस्फियर को हमें कंसीडर करूचे यस और नो मैम केडी सर कुआडे जाइचंदी केडी सर को पे झियो देखा होची सर को मैरिज पई तो सर जाइचंदी झियो देखिया पई हैला हां मैम केडी सर कुआडे जाइचंदी क्लास होनी सीएबी आची पिला हां हां सर एक्चुअली सर मैरिज बहुत जल्दी हेबा को जाउची तो फुल टाइम जदी ऑफिस रे देबे गाइस क्लास रे पुन तांको पर्सनल लाइफ किछ अछि ना तो सर टिके झियो देखिया पे जाइछन हैला हां चलो तो ट्रोपोस्फियर 8 टू 18 आफ्टर दैट हमें का थर्मोस्फियर को एंट्री करिबा कोठी ना मैम अप टू द लेवल को 42 सॉरी 80 टू 400 किलोमीटर ता पूर्व का हमें कोन कहबा दैट इज 40 टू 80 हम कहूची मेजोस्फियर हो ना नहीं मते को देन 18 टू 40 रहइबो की ना मैम स्ट्रेटोस्फियर 18 टू 40 क्लियर चलो नेक्स्ट मते को हां next को the normal lapse rate of temperature in the troposphere is the normal lapse rate of mate kuho the normal lapse rate of temperature in the troposphere is troposphere re normal kete rahuchi temperature set mate kuho relatable को जल्दी कुआ the standard lapse rate kete rahibo na ma'am 6.5 kete 6.5 degree Celsius. So lapse rate हमें केमिति कहूचे कैलकुलेट करूचे that is the decrease of the temperature with the altitude ताको हमें कहूचे lapse rate. What is lapse rate? आपण मानंकु बुझिया पई what is lapse rate? ना the decrease of temperature with the increase in latitude or that go altitude in altitude clear that is the lapse rate yes or no clear tha very good chalo tell me the pressure belts around the globe are primarily created by कोन ग्लोब रो चारि पटे आपन को गोटे प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुए so what is this pressure belt is मते को कौन कहिबा हमें ताकू the pressure belts around the globe are primarily that is created by का कोन कहिबा that is the uneven heating of the earth surface कौन हबो due to the due to the uneven heating of the earth surface that means हमें कहि परिबा कि that causes the expansion contraction of the air and our pressure belt due to the contraction and expansion of the air amara present ruhe kon that the pressure belt amara create हुए हो ना नहीं कारण केबे भी amara contraction air हुए केबे भी amara relaxation हुए so a contraction and the expansion of air रे amara pressure belt हुए clear then चलो which pressure belt is also called the doldrums मते को doldrum हमें कहा को कहूची को pressure belt को हमें कहबा doldrum tell me which pressure belt is also called the doldrum कहा को कहबा मते कहि दियो the subtropical high pressure belt हबा हमर कोन that is the horse latitude this is called as the horse latitude guys मन रखिता clear horse latitude that can but dry one then equatorial low pressure belt को हमें कोन कहबा yes that is the equatorial low pressure that is the cold हमें कहि परिबा that is the doldrum केमिति थाए that is calm थाए hot थाए but dry न थाए humid condition में थाए due to the zone at the equator time रे humid condition में थाए so cold सहित dry है sorry hot सहित dry होची subtropical so ये कोन हबो ना hot सहित humid रहिबो calm hot and humid zone रहिबो at the equator clear polar high pressure कहले this is cold and dry subpolar हे गले this is again हमर कोन stormy region आसी जीवो clear very good चलो so doldrums अपन माने मन रखिबे that is frequent thunderstorm आसे weak winds आसे that's why हमें ताकू कंसीडर करिबा कोथि रे ना सब equatorial low pressure रे clear चलो next मते को which is the most important factor influencing wind movement अपन को wind movement हुए
लो प्रेशर रु हाई प्रेशर को, हाई प्रेशर रु लो प्रेशर को. सो हमारा विंड रो मूवमेंट गाइस हुए बिकॉज ऑफ व्हाई, टेल मी कोथि पाई, फ्रिक्शनल फोर्स गाइस, फ्रिक्शनल फोर्स पाई हमर ये स्लो डाउन ही जाए, विंड टा स्लो डाउन हुए बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. देन कोन आसिला द कैरोलिस फोर्स, कैरोलिस फोर्स रे कोन हबो ना मैम डिफ्लेक्ट करबो विंड को, इट डिफ्लेक्ट्स द विंड. ओके, देन कोन आसिला ना द प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स, ऑप्शन सी, नो 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 नो, प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स दैट एयर मूव करे फ्रॉम हाई टू द लो प्रेशर, फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एयर मूव्स करे due to the pressure gradient force. Go to na ma'am from the high to the low. Clear? Rotation of earth, mate ko rotation of earth ame kon कहउचे, that is creates through the Coriolis force. Coriolis force ame कहि परिबा कोन ता द्वारा, Coriolis द्वारा हमर हुए, initially it was driven through the rotation of earth. ame मने रखो किंतु the steeper pressure gradient ame ता कहउचे, Coriolis नुह ताकि जदी को साइंटिस्ट को सहित रिलेट करिवो, steeper को सहित रिलेट करिवो का सहित कोटे गला रे, pressure gradient with the steeper. Yes or no? Yes ma'am. चलो next मते को, winds are deflected to the right to the northern hemisphere due to, कोथि पई डिफ्लेक्ट करे, मु एबे कहितली डिफ्लेक्ट हेले कोन कहिबो ना मैम कैरोलिस फोर्स कहूछु. जेते बेले डिफ्लेक्ट वर्ड ता आसीबो आपण माने सीधा कैरोलिस को सहित कनेक्ट करिवे, ह ना नै मते को. जेते बेले भी आपण मानकर डिफ्लेक्ट कथा आसिला आपण माने कैरोलिस फोर्स कहता जिवे बिकॉज़ डिफ्लेक्ट्स विंड राइट इन द नॉर्थ, लेफ्ट इन द साउथ. एटा मन रखो, राइट इन द नॉर्थ, लेफ्ट इन द साउथ रहइबो. मीन्स आपण माने हमर कोन बे ऑफ बेंगल आडू को मन रखी, सॉरी बे ऑफ बेंगल कहूची, राइट रहइबो नॉर्थ ना, राइट रहइबो नॉर्थ, राइट टू द नॉर्थ रहइबो. सो आपण माने बे ऑफ बेंगल को पछ करी छिडा ही जाउंतो, आपण को राइट रहिबो नॉर्थ, देन रहइबो साउथ रे. इन दैट कंडीशन हमर कोन आसीबो ना डिफ्लेक्टेड, दैट मीन्स द कैरोलिस फोर्स अप्लाई हबो. यस और नो? यस. सो कैरोलिस इफेक्ट कोन मैक्सिमम कोठे रुए, पोल रे, एंड जीरो कोन रुए इक्वेटर रे. मन रखो, पोल रे रहिबो मैक्सिमम, पोल रे रहिबो मैक्सिमम एंड इक्वेटर रे कोन रहिबो हा मैम जीरो. किए ना ए कैरोलिस फोर्स. क्लियर? क्लियर? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट मते कहइबो, which winds blow between 30 degree and 60 degree latitude. Between 30 degree 60 degree latitude रे मते कहिलो को wind को हमें रिलेट करूछे, which wind? Yes, that is the कौन ना मैम, that is the westerlies. कौन हो ना, westerlies is the blow from the subtropical height, that is almost 30 degree, to the subpolar lows that almost 60 degree. So from the subtropical height to the subpolar lows को हमर आसीबो, subpolar lows को की आसीबो ना मैम, that is the westerlies. Clear? Clear? तो ट्रेड वाइंड हेले कोन ना बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ साउथ एंड इक्वेटर भीतर ये काम करिवो, ये पोल आड़ को आसीबनी, मन रखिथा. पोलर विंड हेले कोन ना ये ब्लो फ्रॉम द पोलर रीजन से रिलेट करिवा, दैट मींस 60 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन रे. बोथ साइड आपण मानु जते पढैथिली प्रीवियस क्लास आपण मान देखिबे जियोग्राफी रो, आपण मानु कोन पढैथिली ना पोलर रीजन, इक्वेटोरियल, पोलर रीजन, ता भीतर हमर कोन एटा गोटे 60 डिग्री लाइन आसे, बोथ साइड रे 60 डिग्री आसे, ह ना नाही. सो दिस वन इज द जीरो, sorry, this one is the equator, zero आसी जिवो. सो ए पोलर रीजन पाखु को आपण जिबा पूर्व जो 60 डिग्री हमर ऑपोजिट रुहे ताको हम कोन कहू, दैट इज द पोलर विंड्स. ओके, क्लियर? वेरी गुड. चलो नेक्स्ट मते को, टेल मी द नेक्स्ट. Which local wind is known as the snow eater in the North America? का सते रिलेट करछो को मते टिके. तमनकर क्लास रे जी करेंट नहीं, अवस्था 12 बजे गलानी. को राइट आंसर कोन हबो टिके को? What will be the right answer? Which local wind is known as the snow eater? Snow eater बोली हमें कहा को जानि छे को ना, नॉर्थ अमेरिका रे अपन मानु कहछि लू हेले अपन मान जानि सन्ते, दिस इज द हॉट ड्राई समर
wind in the north India को हमें relate करूचे कोठी ना मैम लू related with the north India हाँ ना नहीं देन आसिला कौन the foehn आपण माने यूरोप सहित relate करि परिबे foehn आपण माने कर यूरोप रे आसे ताकू relate करि परिबे but the question is about the North America then go with the Chinook सहित माने पडला Chinook कोटे हमर हेलिकॉप्टर माने अछि Chinook कोटे हेलिकॉप्टर अछि जहा थ्रू रे हमर पुष्पक लॉन्च हेतिला the पुष्पक हमर फास्ट हमें कहि परिबा कोन जोटा कि reusable launch vehicle that is first time use हेतिला पुष्पक कोथिरे मैम Chinook थ्रू रे Chinook रा ना कोन हेलिकॉप्टर this is sorry हेलिकॉप्टर रा ना कोन that is the Chinook okay India रे but apart from that come to the geography Chinook कोन आसुची ना that is the warm wind in the Rockies area रे आसे जोटा कि USA and Canada रे आसे melt करे snow को quickly that's why हमें ताको कोन कहूचे that is the snow melter clear very good और snow eater चलो बोरा कहले आपण माने कोन कहबे ना मैम ये तो कोस्टल रीजन सहित रिलेट करियो बोरा को ओके चलो नेक्स्ट मते को which wind system is seasonal in nature मैम 12 बजिलानी कौन लिखला से डिलीट भी कर देला चलो which wind system is seasonal in nature रे seasonal को wind system को हमें रिलेट करछे मते को which wind system is seasonal लोकल विंड ऊपर गाइस डायरेक्ट क्वेश्चन आसुची लोकल विंड को एरिया रे को कंट्री रे काहा को कुआ जाउची प्लीज ताकू टिके माने रखो ओके हां सो काहा को कहबा ना मैम दैट इज द मानसून विंड्स सो द व्हिच विंड सिस्टम इज सीजनल इन नेचर सीजनल रे जे आसे हम ताकू मानसून कहूचे जेमिति कि रिवर्स डायरेक्शन आसे रिवर्स डायरेक्शन विथ द सीजन ड्यू टू द लैंड सी थर्मल कोन कंट्रास्ट रे हमरटा हुए थर्मल कंट्रास्ट हुए दैट्स व्हाई हमर को लैंड एंड सी भीतर आसे दैट इज द मानसून विंड्स that is the monsoon winds and waterlies का हमें कौन सॉरी कौनटा westerlies को हमें कौन कहूचे that is the permanent belt wind हां ना नहीं मते को permanent belt wind को हमें कौन westerlies कहूचे polar wind हेले कौन हबो that is also permanent हां ना नहीं so monsoon is the strongest in the Indian Ocean and that affects हमर ओडिसा को तो डायरेक्टली अफेक्ट करे हां ना नहीं ओडिसा को डायरेक्टली अफेक्ट करे हमर monsoon चलो नेक्स्ट मते को the horse latitude are associated with कहिथिली horse latitude word टा कोन जेते बेले हाई प्रेशर आसे कोठी calm condition रे high pressure in the calm condition हमें ताको कहूचे horse latitude why because the subtropical height कोन 30 degree north and south with little amount of surface wind हमर present थिबा हमें ताको consider करछे कोथिरे that is the high pressure and calm conditions रे आसे that is what the horse latitude हाँ ना नहीं लो प्रेशर एंड स्ट्रांग विंड कोड थाए ना मैम इक्वेटर रे थाए जोड़ा को डोल्ड्रम तो मानू कहितली हाँ ना नहीं लो प्रेशर स्ट्रांग विंड हेले इक्वेटर डोल्ड्रम सहित रिलेट करियो ओके चलो नेक्स्ट वो मते जेट स्ट्रीम्स आर फाउंड नियर व्हिच ट्रोपोपॉज जेट स्ट्रीम्स हमर कोठी देखिया को मिलिबो जेट स्ट्रीम्स आर कोठी कहितली that is tropical habani tropical रे हमर weak jet streams आसीबो tropical रे हमर weak jet stream देखा जिवो जोटा कि only in the summer but जेते बेले jet streams कथा पचारि छि that is in the strongest in the कोडी jet streams found in the polar front कोडी polar front that means 30 to 60 degree सहित रिलेट करिवो केते 30 to 60 degree हाना नहीं yes 30 to 60 degree latitude आसीबो आर्कटिक हे गले ये आसी जिवो वेरी हाई लैटिट्यूड ये हमरा हाई आसी जिवो अंटार्कटिका हेले दिस इज द वेरी कॉमन वन चलो नेक्स्ट मते को द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड एट अ गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड जेते बेले मैक्सिमम अमाउंट हमर कोन ना वाटर वेपर होल्ड करके एयर रखि परिबो ताको हमें कोन कहूचे दैट इज द टेंपरेचर इज कॉल्ड व्हाट important guys मु अगेन कहूचे दिस इज द important one ताको हमें कौन कहूचे ना मैम दैट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 16 ए केमिति हबो ड्यू पॉइंट हमर कोन की द टेंपरेचर एट व्हिच कोन कंडेंसेशन स्टार्ट्स हुए जोठी हमरा कंडेंसेशन स्टार्ट हुए ताको हमें कहूचे कंडेंसेशन स्टार्ट हुए ताको हमें ड्यू पॉइंट कहूचे
एठी कोन पचारछि ना एयर कैन होल्ड एट अ गिवन टेंपरेचर केते ना मैक्सिमम केते दैट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ताकू रिलेट करिवो ड्यू पॉइंट इज नॉट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सॉरी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी केमिति हबो रे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी केमिति हबो सॉरी हां ऑल ऑप्शन को एक्सप्लेन करूछि एटा आपनकर ड्यू पॉइंट आसी जिवो कंडेंसेशन स्टार्ट हुए हमर ड्यू पॉइंट रु स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हबनी स्पेसिफिक नो सैचुरेशन वेरी गुड द सैचुरेशन ह्यूमिडिटी हबो यस सी नहीं डी हबो डी हबो ये सिद्धार्थ रेड्डी that is the saturation humidity हबो because maximum vapor contain करे कोठी ना मैं saturation कोन saturation humidity हमें ताकू कहूचे that is possible at a given temperature particular गोटे given temperature रे हमें कहइबा humidity high सेठी थाए so the one air holds the maximum vapor or more vapor that is higher in the saturation humidity एटा मने रखो and specific humidity कहले कोन हबो ना ratio of water vapor to the total air mass the ratio of water vapor to the total air mass ताको हमें कौन specific humidity what is the absolute humidity then guys the actual water vapor present in the air कोन मैम absolute हमें का कहूचे ना जोटा actually रे हमर air रे as usual normal days रे present रुहे actual water vapor present in the air ताको हमें कहूचे कोन that is the absolute humidity एते की बुझी पारिलो तो कहली तो सिद्धार्थ रेड्डी टिके वेट करो ना सब तो कहली जोटा एक्चुअली रे हमर प्रेजेंट रुहे दैट मींस हमें कहि परिबा तो एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर मैक्सिमम नाही नॉर्मल डेज रे आपण माने देबे कंसीडर करिवे वाटर वेपर एयर रे केते अछि दैट इज द एब्सोल्यूट ओके यस चलो नेक्स्ट मते को रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स 100% when get the relative humidity हमरा 100% हे जाय मते को obviously जेते बेले कोन एयर ता हमरा air is fully saturated थिबो when air is got fully saturated at that point we can say this is the 100% of the point na RH this is the relative humidity yes or no that is called what ए जो air is fully saturated ताको हमें कोन कहूचे ने मैम this is called the saturation point हो नहीं या को ही हमर कोन कहती ना मैम saturation point बोली हम याको कहूचे clear air temperature rise होबो that means हमर कोन lowers होबो relative humidity ये तो opposite हे जीवो ये हमर opposite one हे जीवो clear pressure decrease होबो कोठी मते को pressure decrease होबो that may cause the cooling but not directly the 100% of relative humidity relatable clear very good and हमर winds blow faster that means हमर कोन increase हे जीवो evaporation जते बेले winds faster blow करिवो so evaporation हमर always कोन ना increase हे जीवो clear चलो नेक्स्ट मते को which cloud type indicates fair weather को cloud type आपनकर fair weather indicate करूछु मते को which cloud type indicates fair weather tell me what that is the cirrus that is the cumulonimbus that is the stratus that is the ultrostratus what will be the right answer na ma'am that is called the cirrus or cirrus whatever you can pronounce so that is the high and hame kahi pariba wispy clouds indicate the good weather kona normal good weather को हमर के indicate करे good weather को के indicate करे then this is the cirrus yes or no then what's about the cumulonimbus कोन कहउछ ताको हमें what is about the cumulonimbus means amara thunderstorm कोन heavy rain lightning thunderstorm ताको हमें relate करूछे lightning then mate को stratus कहले कोन बुझुछो what's you mean by stratus that is the low and हमें कहि परिबा gray clouds माने बहुत ही धीरे माने कहि परिबा dull weather the dull weather that is the stratus that is low cloud as well as the
ना मैम दिस इज very the clay माने कहि परिबा low cloud and the dull weather को भी we can relate it with. Then the ultrastratus, what's about the ultrastratus, tell me? That is the medium level of the clouds is called the ultrastratus. सेतेबेले stratus कहला this is the low one, then ultrastratus माने कोन हो? This is the medium of the stratus. Medium of the stratus, yes or no? Good morning Nalini. Next mate को hail is a form of a hail कोन? Go to hell, सही वाला hell नहीं, मते को hell वाला hell. Go to hell वाला hell नहीं guys. So what do you mean by the hell? Tell me. Hell कहले कौन बुझुच? Tell me. Yes, that is the precipitation in the solid form. That is आमे कौन कहूचे? Hell हमर केमिति हुए ना जते बेले frozen हे जाय the pellets formed in the कौन एबे जो कहिथिले आपण माने को that is the cumulonimbus cloud जते बेले अपन को frozen condition में पड़े आसे pellet का frozen condition आसे जते बेले हमें ता कौन कहूचे? That is the hell. What is freezing rain then? Sorry, what is freezing rain? That is the rain freezes on the ground contact. Ground रा contact रे आसिला पले water हमर freeze हे जाय जोटा कि normally हमर कोठी ना मैम तुंद्रा एरिया रे हुए ताको अपन रिलेट करि परिबे. This is the different from the rain. तो हेल हमर कोन आसुची ना मैम दिस इज द प्रेसिपिटेशन इन द सॉलिड फॉर्म रे हमें कहूचे. स्नोफॉल हेले कोन बुझिबो? दैट इज द फ्रोजन इन द क्रिस्टल्स, फ्रोजन आइस क्रिस्टल्स को हमें कहूचे स्नोफॉल, हना नहीं. चलो सो हेल स्टॉर्म्स कॉमन इन द ओडिसा ड्यूरिंग को टाइम ना काला बैसाखी टाइम रे हेल स्टॉर्म्स हमर हे ही थाए. ओके मन रखिता ओडिसा सहित काला बैसाखी को रिलेट करिवो. And during this Kala Baisakhi, the hails are common in the Odisha region. Next question for you guys. Tell me the cyclonic rainfall is associated with. Tell me the cyclonic rainfall is associated with. Very good. कहा को? ना ma'am that is with कहा सहित? ना low pressure system. The cyclonic rainfall केमिति आसे ना लो प्रेशर हेले. that means हमें कहि परिबा कि cyclone that comes around what ना जते बेले हमर प्रेशर लो हुए that means the low pressure, yes low pressure plus कोन ना मैम जते बेले rising air then आसीबो rainfall. cyclone हेले लो प्रेशर आसीबो. लो प्रेशर आसिले हमें कोन कहि परिबा ना मैम दैट इज राइज इन द एयर, rising air, then after that हमें कोन कहि परिबा ना मैम comes the rainfall, ह नहीं then rainfall आसी जाय. so right answer कोन हो? low pressure system. What's about the mountain barriers कोन कहिलो मते? what do you mean by the mountain barriers? हमें कहि परिबा कि this is the orographic rainfall हमर mountain barriers रे हुए. then जदी convection currents पछारिला then कोन अपन कहि परिबे the convectional rainfall को हमें convection current कहूचे. What's about the sea breezes? sea breezes को हमें कोन कहूचे? that is very माने local winds को हमें sea breezes. जो एरिया रे हमर sea अछि ताको पाखा पाखी जगह कोन कहूचे? ना sea breezes, हना नहीं. चलो rainfall सहित यार किछि रिलेट नाही, mechanism ही different. next आसो the El Nino is associated with warming of. El Nino associate आसे कहारो warming रे? हां ये सिद्धार्थ रेड्डी. वेस्टर्न घाट इज द माउंटेन बैरियर भारे काम करे. नेक्स्ट मते कुआ द एल निनो को आपण माने कहा सहित रिलेट करूछंती? अटलांटिक कोन बजाची? एल निनो इज एसोसिएटेड विथ वार्मिंग ऑफ व्हाट ना मैम दिस इज वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन. एल निनो ऑलवेज रिलेटेड विथ द पैसिफिक ओशन and the abnormal warming in the eastern and central Pacific region. कोठी ईस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक रीजन रे हमरा आसे द एल निनो. नेक्स्ट मते को द लॉनिना आसिला मते को हां एल निनो वार्म करेंट. मते को द लॉनिना फेनोमेनन आसिले आपण माने कोन बुझुचंती? हमें कहि परिबा कि एल निनो रो ऑपोजिट लॉनिना, दैट मींस द कोल्डर देन द नॉर्मल पैसिफिक वाटर. yes or no? this is something हमें कहि परिबा कोन the strengthening of the trade winds, that is cold water swelling in the Pacific region we known as that the कोन La Nina. yes or no? yes, very good. चलो and weakening of monsoon, that is usually strengthen the Indian monsoon. clear?
सो लनिना ईयर ऑफर हमर केबे हेतिला मते को लनिना रो इयर्स हमें कहि परिबा ब्रिंग केबे हुए लाइक केबे आसे इंडिया को फर्स्ट टाइम हमर केबे आस्तिला ना मैम 1998 रे तापरे 2010 रे तापरे 2020 रे 3 इयर्स आपण माने मने रखन ओके नताशा चलो नेक्स्ट मते को the intertropical convergence zone the ITCZ shifts the north during the intertropical convergence zone ITCZ shifts during what during कोन that is the June solstice कुआडो तमर इक्विनॉक्स पळे आसिला जणे के मारि दियो समस्त देखियो मारिबो भाग्य सॉरी भाग्य कौन यार तमे फिर स्टार्ट कर दो ना भाग्यटा भाग्य ओके भाग्य ओके रिलेट करो दैट इज द जून सॉलिस्टिस हमें कहूचे जेते बेले सन कोठी थाए ना मैम ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थाए दैट इज द ITCZ शिफ्ट द नॉर्थ क्लियर एट दैट टाइम हमें कोन कहि परिबा हमें ताको कोन कहि परिबा ना मैम दैट इज द कोन द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्लियर को टाइम रे ना मैम जून सॉलिस्टिस टाइम रे थाए तो ITCZ northward shift kebe hue na on the onset of the southwest monsoon in India yes or no yes next chalo so tell me which cyclone jaldi ko which cyclone prone basin affect the Odisha the most ko cyclone prone basin amar Odisha को बेसी affect करे मते को Odisha को बेसी affect करे को cyclone prone basin उफ जल्दी जल्दी को क्लास सारी देबा यार भयंकर गरम होची भयंकर गरम होछि रे पिला माने yes that is the Bay of Bengal का को कहबा ना मैम Bay of Bengal जोटा कि ओडिसा is highly हम कोन कहते रे ओडिसा is highly vulnerable to the Bay of Bengal cyclones हां ना नहीं अरे करंट ही नहीं एसी चलिबो कोन ओके सो Arabian Sea is less intense ताको छाड़ next also so greenhouse gas absorbs mainly which type of radiation को मते relate करो tell me greenhouse gas absorbs mainly which type of radiation that is the infrared कौन हबो ना infrared radiation yes or no तो हमारा greenhouse gas trap the earth or हमारा कौन outgoing infrared to the greenhouse gas effect that is the infrared radiation yes or no yes ma'am gamma rays कौन करे मते ताले को ना that absorb the thermosphere absorb ए हमारा gamma rays कौन हुए ना में thermosphere layer रे absorb हो जाए this is absorbed by thermosphere okay clear very good so carbon dioxide hela methane hela nitrous oxide hela chlorofluorocarbons hela are the major greenhouse gases clear chalo next ma dekho which on previous pole asli next koigi okay rainfall is measured by rainfall hamara measure कोठी हुए ma dekho ha हुए चलो नेक्स्ट को मते टिके रेनफॉल को हमें कोउथरे मापुचे कोउथरे मते को दैट इज द रेन गॉस यस हाइग्रोमीटर को कहा साथे रिलेट करिवो हाइग्रोमीटर विथ द ह्यूमिडिटी कहितिल ना नहीं H for hygrometer H for humidity what's about the barometer that is measures the pressure हमर कोठी मपा जाय ना मैम थ्रू द barometer then what's about the anemometer ना मैम wind रा स्पीड को मापे anemometer कोन ना wind speed को measure करे through the anemometer the rain gauge is what the measures the rainfall in the mm okay mm clear चलो next म देखो anemometer is used to measure anemometer एबे ही कहली कोन ना wind speed को मापिबा पई wind speed को मापिबा पई हम माने यूज करछे कोन ना anemometer को yes or no yes हाँ ना नहीं yes चलो एयर प्रेशर बारोमीटर कहिछि एयर प्रेशर बारोमीटर नेक्स्ट ऐसा which instrument is used to measure humidity guys humidity again H for humidity H for hygrometer
H for humidity, H for hygrometer, हाँ ना नहीं, thermometer temperature, thermometer को relate करिबा temperature सहित, then आपण मानकर pyrometer, pyrometer को कहा सहित relate करिबा कहिलो ना मैम हमर high temperature आपनकर जते बेले hurricanes टाइम रे आसे कोठी hurricanes टाइम रे high temperature आसे hurricane सहित relate करो सो सेही टाइम रे हमर कोन pyrometer मैम यूज हुए क्लियर वेरी गुड सो मते को नेक्स्ट एंड दैट इज द एनेरोइड बैरोमीटर ए बैरोमीटर त आपण मान जानि सन्ती प्रेशर सहित बट ए आरो जो आर सॉरी कोन एनेरोइड बैरोमीटर को हम कोन कहू छे दैट इज आल्सो द मेजर द प्रेशर दैट आल्सो मेजर द प्रेशर एंड दिस इज वी कैन से कोन हमरा हाइग्रोमीटर को हम यूज करू छे गोटे टाइप रो मने अछि माने त माने जदी जानि थिबो मे बी अरे करेंट नहीं सस्मिता एसी नहीं नो करेंट ही नहीं ओके सो आमे कहि परिबा द स्लिंग साइक्रोमीटर हमर इज अ टाइप ऑफ व्हाट हाइग्रोमीटर आपन को जदी पचारा गला केबे द स्लिंग साइक्रोमीटर को आमे कोन कहू छे स्लिंग साइक्रोमीटर इज अ टाइप ऑफ कोन हाइग्रोमीटर मन रखता क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को द ओजोन होल इज मेनली फाउंड ओवर ओजोन होल हमर कोठी ना मैम अंटार्कटिका रे कोठी अंटार्कटिका रे देखिया को मिलिबो ओजोन होल क्लियर द कोल्ड पोलर हमर कोन स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एक्सेलरेट द ओजोन डिप्लीशन ओवर देयर क्लियर रिलेट करि परिबा वेरी गुड चलो लास्ट क्वेश्चन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जोटा कि 1987 ने डील हेतिला विथ रिडक्शन ऑफ व्हाट टेल मी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आपण माने कहा सहित रिलेट करि परिबे जोटा कि 1987 रे हेतिला दैट इज द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कोन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस सहित रिलेट करि परिबो यस नो यस वेरी गुड ए बी सहित हार्ट टा कोन नतासा फ्री नतासा बी सहित हार्ट टा फ्री ओके सो ग्रीन हाउस गैसेस अकॉर्डिंग हमें कोन कहउचे ना मैम क्योटो प्रोटोकॉल एटा केबे हेतिला ना 1997 में मन रखो ग्रीन हाउस गैस कथा पछरले कोन कहबो दैट इज द क्योटो प्रोटोकॉल केबे हेतिला ना 1997 रे ओके तो एसिड रेन पोल्यूटेंट्स सहित हम रिलेट करि परिबा कि किछि दैट इज कंट्रोल्ड बाय द रीजनल ट्रीटीज दैट इज नॉट बाय द मॉन्ट्रियल और पेरिस और नथिंग क्लियर न्यूक्लियर एमिशन सता कहले कोन ना दैट इज गवर्न बाय द IAEA तमानक पई फुल फॉर्म रो टास्क रहिला कमेंट सेक्शन रे जणेबो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAEA ओके सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज इक्वल टू द मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरनमेंट ट्रीटी एटी की रिलेट करके मन रखबो हां की नतासा मो पई हाय पड़ जीबी एते गरम रे तो मते हार्ट फोट हो जा प्लीज रे देख रख दो So 3499 होची बैच प्राइस वैलिडिटी 1.5 ईयर गाइस डू एनरोल द बैच एंड आपण मानकर वन डे एग्जामिनेशन जत्ते भी 1.5 ईयर भीतर रहिला आपण मानकर महाटैक रे कवर ऑफ हेजिवो विथ दैट द आपण माने पीसीएम सीबीजेड या फिर आर्ट्स रे बैच नेबा को जाउछन वैलिडिटी 1 ईयर प्राइस 1499 जस्ट गो फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच नतासा को तार हार्ट फेरे देबा नतासा हार्ट फेरे दोची चलो थैंक यू सो मच गाइस हैव ए गुड डे लव यू टू नतासा चलो बाय बाय गुड नाइट गाइस मु कहि छी माधव मते कमेंट सेक्शन में दरकार हां ना कमेंट सेक्शन में कहि छी त मते कमेंट सेक्शन में ही आंसर दो ओके चलो 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 सॉरी टिके जल्दी सारी दोची लाइक आहुरी भी रिलेट करी करी बहुत जिंस कहिबार थिला बट हबो एक रे तो सकाळू आपण मानकर केते 2.5 घंटा क्लास नै सारी छी देन एबे ये थर्ड क्लास आ पेशेंस पाउनी आ ब्रेकफास्ट भी करिनी सेति पे पूरा भूख अलग लेवल पे ओके चलो टे खाई दिए तापर नेक्स्ट क्लास रे आपन भल से पढे चलो थैंक यू बाय बाय लव यू ऑल